एक बार मेरे कंपनी में क्या हुआ कि आई वॉज वेरी अगेन यंग 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 पर्सनल मैनेजर एंड यूनियन गाइस जो थे मेरे पिताजी के लेवल वाले थे, पिताजी के एज वाले। So let me put one hypothetical scenario for you. This will certainly guide all the younger HR and IR leaders in a proactive way. When you are taking tough stand, or you have to see that ki proper discipline is maintained, proper production is maintained, everyone will follow the laws, rules, regulations of the company. उस टाइम कुछ टफ कंडीशन में, सिचुएशन में टफ स्टैंड लेना, कुछ नए रूल लगाना, और दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट लोगों को अच्छा नहीं लगता यूनियन को। तो ये इन शॉर्ट टर्म क्या होता है, वर्कमैन दे बिकम एग्रेसिव, नहीं यार स्ट्राइक करेंगे तो मैनेजमेंट दे देगा, ऐसे उनको लगता है। स्ट्राइक करेंगे, हम काम बंद कर देंगे तो मैनेजमेंट इमीडिएट हमारा डिमांड पूरे करेगा, लाइक दैट दे फील। बट ऐसा नहीं होता है सर, प्रोफेशनल Hmm. मैनेजमेंट होता है, जो करना है वही करते हैं, जो देना है वही देते हैं। So, good morning, audience. To this yet another serving of Heart to Heart Conversation series. I must thank all of you for the love and affection which you have bestowed upon some of these videos, rather all the videos. We must have completed 70 conversations in the series, and it's all possible because of you, audience. So, thank you so much for being there. And for people like Balasaheb, Sonawane sir, who have been kind enough to join me. Whenever I send a request to them to come as a guest, they always come. So Bala sir, thank you so much. Pranam आपको कि आपने मेरे invitation को accept किया. It's always a pleasure for me to talk to you. And I see, and every time I talk to you and even other people, other senior guests, I always get a feeling that you have got so much of deep insight and knowledge and experience. And I wish more and more people can make use of this. The thing या here is that unless they talk to you, they will not often get the depth of knowledge which is there with you. Audience, Balasaheb sir started working in the field of HR, IR, and administration in from 1984. So you can well imagine he has got 4 या decades of working experience and insights in this field. Balasaheb sir is currently the vice chairman of NIPM, National Institute of Personal Management. He's based out of Pune, but he is the vice chairman of NIPM India. And in the most recent corporate assignment, he was the general manager HR, IR, and administration, which built a graphic paper, a company which is a pretty well-known company, and it's a company pan India, and there is a site very close to Pune, very close to big place called Bigwal is there, which is very close to Pune and Baravati as well. Balasaheb sir has been there as the head of HR and administration. He recently superannuated, and good thing is that now he is working with multiple companies under his consulting firm called Forever 24. And now he's open to work with people. When it comes to employee relations, friends, I know that you all are excellent people, but it always pays rich dividends for you to get consultancy from people who have seen it, who have done it, and who have actually have got a lot of suggestions, especially in the field of proactive employee relations management. Okay. When things go wrong, then of course there are a lot of things which people do, but then we are talking about proactive employee relations building, करेक्ट proactive actions which are very important so that we do not face some of the challenging situations which I have seen many companies facing. A stitch in time saves nine. People like Balasaheb sir are going to help you in putting that a stitch on time so that you save nine times the problems which may happen later on. Balasaheb sir, once again करेक्ट। thank you. And आज हम बात करने जा रहे हैं. Today we're going to talk about employee relations cases. And of course, we had the first conversation with Balasaheb sir in which we spoke about his journey, his professional, his personal journey. And of course, I think there are many insights in that conversational video, which is there on the same channel, which I would strongly recommend to all the people. Now we are in the second conversation, which is all about one topic, and that is employee relations life, real life cases. Because I know that Balasaheb sir has gone through and has must have led his team through many employee relations cases over the last 4 decades. And we thought of sharing some of these real life cases for the benefit of people
Before I move on to Balasaheb sir, before we all listen to him, just one last thought which comes to my mind. People like Balasaheb sir have got an ocean, a sea of knowledge. And one of the aims behind this conversation series is to just see that we get at least a couple of buckets of water from that knowledge and bring it to people. And of Right. course, if you want to have more knowledge, you have got to talk to him. Balasaheb sir, would you like to talk a bit about employee relations? And what do you think makes a good employee relations leader or manager? Maybe from there we can start and then we can talk about some cases from your experience. Once again, thank you so much for joining as a guest. Yeah. Basically, yes, thank you for that because it is our second conversation, and I am happy to share my experience and expertise with you, which should be beneficial for the HR fraternities of new generation. Yes. Because I have worked in the year 1980s and 90s, and that was a really tough time. Yeah. Yeah, it was tough time. Now the situation has changed. Industrial relations scenario is also changed. Yeah. But the things are very again complex now. Job is becoming challenges day by day. And as I told you last time also, ki people are now very impatient. They are very impatient and they don't have patience to handle the cases or stay in the job for long time and all this thing. And but HR is a very particularly is a basically dealing with the people, dealing with the human. Mm. As I Mm. told you, ki dealing with the machine is very important because machines work as per the command given. But it is not the people. We have to deal with the people, and it is very difficult to handle the people. Yeah. Yeah, like that, Yeah. one has to be very particular about his aim, goals, focus, and his commitment. All these things are there that we already discussed. I Mm. think during my 40 years of time, I have come across with so many companies, so many issues. It will be 1 hour will be too less, I think, to share with my all success We'll have a stories, series of all conversation on employee relations. life stories, and all these things. Yeah, Yeah. but Yeah. we can Sure. we can start with some of the stories. I will take it in Yeah, yeah. short. So we can start with one. Sir, if I ask you a question as which, of course, I think you must have handled many challenging cases, many enriching Yeah. cases as well. But if I ask you to think of one of the most challenging, maybe the most challenging IR case which you faced in your career, Okay. what would that case be? Of course, we'll not use the name of the company and people, Yeah, so yeah. that the idea is No, to I will focus. I will skip the On, name of the company, but yeah, I will give some of the hints about it. yeah, sure. I think I was in Baddi. I was in Baddi in one of the good company, and I was specially deputed for there for to settle out the all these IR issues and all these things. Mm-hmm. And Himachal Pradesh is a place where the industrial relations and culture is not there. Industrial culture is not there. Company had Mm-hmm. two plants started with 3 4 years back, and Okay. after 3 4 years, these people have started saying ki we need salary hike, we need agreement and all these things. Yeah. And there was no union and all these things. But Yeah. the group of people came along and they said कि साहब हमारा तो सैलरी बढ़ना चाहिए, अदरवाइज हम Yeah. ये सैलरी पे काम नहीं कर सकते. Mm-hmm. Then they gave some letter, simple letter कि हमें सैलरी राइट चाहिए, अदरवाइज ये सैलरी में हम तो डिफिकल्ट है सर्वाइव करना. Then we said it is not it is a very big process. It requires process and all this thing. It requires a lot of this bargaining, collective bargaining system is different, and you have to follow these things. Mm-hmm. I told them ki either you have to come along with some of the team or committee, union committee, or Mm-hmm. you come along with some union. Union They said members. no 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 हमारे पास तो कोई यूनियन नहीं है और हम तो यूनियन नहीं बट हम तो चाहते हैं कि हम यहाँ काम करते हैं तो हमें सैलरी राइज मिलना चाहिए. I mean, the Mm-hmm. management was very professional. They said कि we can't discuss with all the employees one to one. We should have Mm-hmm. some union and all these things. We should have union. We will discuss definitely, and we are ready to discuss and finalize the issues because we don't want such problem and all these things. At that time, there was no union, and I was new to Baddi place. One fine day, the people started strike. They suddenly stopped the work. The issue was there. Then we thought, what to be done? What is to be done? Then my Uh, boss told that कि Balasaheb,
कुछ भी करो, लेकिन आज आज आपका रात का, आज पूरा रात आपके पास है, जो भी करना है, ये बंदा है यूनियन वाला, कोई पकड़ो, उसको कल लेके आओ, गेट पे वो झंडा लगाएगा, इन लोगों को साथ में ले लो, और उनके साथ फिर एग्रीमेंट करेंगे, हम ये सभी वर्कर के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे. My goodness, within one day you had to complete this I was complete. new to this place, I was not knowing the guy and all these things, and my boss told me that ki, you will not take anyone along with you, you will go alone, you will do all these things alone. That was very tough task. The region was not knowing, the location was not knowing, people were not knowing. But I went to the one guy, then I spoke to him, I have discussed with him, I told him all the issues. Somehow, after long discussions, he agreed to display his union board next day. And I also asked you collect the people from these guys, and he was knowing that people also. He took there. Then we had the union display. Then we asked that guy to submit the chart of demand. Chart of Hmm. demand. Then the negotiation process started, and finally we come out with some amicable agreement. And since it was a new place and it's Himachal Pradesh, then even these government officers were not knowing what is the conciliation proceeding and what is the conciliation agreement. In fact, we had taken this issue to the conciliation officer, and finally, we have signed first amicable settlement, conciliation settlement in Baddi by taking the help of outsider union, by making the union for the employees, making their members, and following all procedures. We made it a very systematic and appropriate conciliation agreement. But forming a union in one day, it was a very difficult task for me, which was given by my boss, and I could succeed in that case. Very interesting. I'll say it's a very challenging case also because it's truly a path breaking case. Path breaking because in this case there is no union, but the management Yes. sort of has started thinking of creating a union because, of course, you can't talk to all the employees. Yeah, yeah. And employees, without forming a union, they started negotiating for salary hike, which was must have been a very very unique, awkward situation. That's the reason, audience, I always tell people that when it comes to employee relations, always be in touch with some people who have got this long and deep experience because things are pretty unique and there is no book on employee relations. Correct. I'm to see a good book on employee relations. You have been working with some people to create some first few books of on employee relations in India, but these are yet to be published. Having said that, till then, of course, you have got to speak with experts. It's very interesting, very different case, sir. There are people coming to you, and then there is no union, and then you are asked by your boss to help create a union within 24 hours, and also to Yes. go alone. I think that's the And reason a boss is a boss. plant was shared, and we were under tremendous impression to do the production activities and all these things. Absolutely, It's very that's the difficult. goal. No, this is very clear, and that's the reason a boss is a boss. Boss has said you have to get it done. As simple as that. And you got it done, which is very interesting. Thank you so much for sharing this. This also reminds me that be it Maharashtra, be it Kolkata, West Bengal, be it Himachal Pradesh, be it Tamil Nadu, when it comes to union, it's all the same. Everywhere, it's all same set of very high degree of challenges which happen, which companies see. Great. Sir, you also have been there. I think you worked in Waluj industrial area, which is also close to my heart because I did work in I Waluj. worked in Nashik also. I will tell you one Nashik also, example of yeah. Nashik in it. Would you like to talk a bit about your experiences in Nashik? I was, How कैसा रहा union it was management? my first job. I joined as a personal assistant after my graduation and all these things. When I started my first job in Nashik, after graduation, just I was managing management as a personal assistant. That Yeah. time, after some time, what happened is management staff, for their Hmm. demands, they joined the union which was there for the workmen. Hmm. 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 Generally, Hmm. workman and management staff union is very rare. Yeah. Generally, no management staff is joining the union of the workmen. But somehow, I don't know, it was 1986 or so, Hmm. 1986. This management staff joined, and they've signed some of the forms of the union and all this thing. One day, because I was in working as a personal assistant in personal department, it was very Hmm. confidential department. One Yeah. day the union guys came to me and he said कि आप ये union का form भर दो. What's the form, Bhargav? Union का. Union You the form. become you become a union member. You become a union. You make But I was very young and I was very aggressive. What I told him, बोला बोला आप how you dare to come to me? आपको पता है
See, I am working in personnel department, which is very confidential department. My boss is brigadier head of the scene, and I am working with all confidential things and all these things. And as a management person, I cannot join the union. How you dare to come to me? वो Yeah. उसको बहुत गुस्सा आ गया. उसको बहुत गुस्सा आ गया. How you are telling like that? And again, then after some time, he went to my boss, brigadier. He said कि वो आपका बंदा तो बात नहीं करता ठीक से. वो Mm. वेरी एग्रेसिव. और हमने क्या बात किया, और वो क्या बात करता है, बोला हमारे पास क्यों आ गए, ये हो गए. बोले क्या हो गया यार. देन ही सेड कि आई विल फाइंड आउट. वो जाके Yeah. यूनियन जाने के बाद फिर वो उन्होंने मुझे बुलाया कि क्या हो गया बेटा. मैंने सर Yeah. ऐसा क्या, वो मुझे यूनियन में आना चाहते हैं. हाउ आई कैन जॉइन द यूनियन. हाउ आई कैन यूनियन बिकॉज आई एम वर्किंग इन पर्सनल डिपार्टमेंट, इज वेरी Yeah. कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट. एंड हाउ कैन आई कैन जॉइन. He Yeah. said, बेटा आप बहुत अच्छा किया आपने, बिकॉज यू कैनॉट बिकम द यूनियन मेंबर, अदरवाइज तो फिर हमारा तो काम ही बंद हो जाएगा. बट देखो, यू आर वेरी यंग. देर इज अ वेज एंड मीन्स हाउ टू डील विद द यूनियन एंड ऑल दिस थिंग. आप थोड़ा सा एग्रेसिव में ज्यादा है उसको बोल दिया. तो बी टेक केयर. उन्होंने मुझे गुस्सा नहीं किया, बट उन्होंने बोला कि हाउ टू डील विद दिस गाय. दैट Mm. वाज वेरी फर्स्ट Mm. इंसिडेंट डीलिंग विद द आउटसाइड यूनियन. Yeah. एंड बट आफ्टर दैट अगेन दे सेड कि नहीं यार, ये बंदा अच्छा है भाई, वो ठीक से बहुत अच्छा बिहेव किया मेरे से. और दे नेवर केम टू मी कि भाई यूनियन में मेंबर हो. इनफैक्ट बाद में हमने वो यूनियन भी निकाल दिया. वी वी टेक आउट ऑल द मैनेजमेंट स्टाफ फ्रॉम दैट यूनियन. यस. Okay. 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 Very interesting audience. So you can see that every situation of union is different. Every case has got some uniqueness. For example, in this case, this is the first time that I have heard that union members come to the personal manager, and they try to create confusion within the management team. They try to kind of create some kind of doubt by making a recommendation or proposal to the personal manager to become part of union, which is Yeah. something that I've never heard of. So I think these are very interesting cases, and that's the reason I always say that it's all a unique case with each company. At least, despite the fact that it's all the same union management thing, but still it differs in treatments. And also, I think there is another thing which Balasaheb sir said very clearly that we need to just see that these provocative acts or behaviors, which anyway are going to be there in all the companies, do not get us in a situation that we say something which might be used by the union. And that's what I have seen. This is one of the things which is there in almost all the companies, that we just have to maintain our calm. Balasaheb sir, do you recommend HR, I mean, IR people to do some meditation every day, to build some habits so that they're always calm? Of course, I think in this case, I think it was Because absolutely yeah, perfectly you are absolutely right, because keeping high patience is very important nowadays. patience. Because you don't know what problem will come to you, or how situation will come, how the Indian guys will come to you. And if we take it aggressively, then the issue becomes big. Things become In worse. that case, Yeah. one has to be very patient, very calm and quiet, and we have to have a great listening skill. Unless and Mm. until we listen to them and allow them to fully exhaust, things will not work out. Otherwise, things will become worsen, and you will not be able to control the situation. In fact, things will be more difficult to handle it and all these things. For that purpose, meditation, then keeping patience, listening skill, you are again handling the situation on the moment, and all these things are very required. And that needs to be taken care by the virtue of your experience, dealing with the cases, dealing with the situation, all these things. And finally, you have to see that what ultimately you have to achieve. You have to Mm. achieve the peace, whether you have to have proper industrial relations, or you have to create the havoc. That you have to decide. Yeah, no, this is very But I important always, point of view. as you Yeah. said, I always work with proactive because I worked in the various industries for 8 to 9 years. This is my Mm. tenure because I worked as a long-term player in any of the organization, Yeah, and which for is that important. purpose, I had to always have a long-term vision, and I was working towards that. I will work here for the so many years in that organization, so that even organization will not have any problem, or I can do something better. No, this is very important. I think the point which Balasaheb sir has elucidated is very important for all the employee relations professionals to take cognizance of. He said it very clearly that it's very important for us to keep our calm. It's very important for us to keep our calm and listen. So keeping Yeah. calm, emotional intelligence, let's be emotionally intelligent. Let's do not get off the hinge, too frequently. Let's keep calm, listen to them.
and let's listen to them in such a manner that they are exhausted with all their points which they wanted to share. Balasar sir, recently I had this conversation with a person who has been behind hiring many CEOs and CXOs. Okay. And Harsh Kapoor Pillai, she's based out of Pune only, and I know her over last 15 years since she has been working with many companies. I asked her a question as Harsh, would you like to talk about top qualities which you always look for while hiring CXOs and CEOs? She also said the same quality which you spoke about, sir. You Okay. spoke about listening ability, and Yeah. she spoke about the same quality. She said that the first quality which we look for is listening. It's not kind of leadership. It's not about kind of speaking, communication, and confidence, and this and that. She said it very clearly. She nailed it. She said that it's all about listening. So as Bala said, sir, in case of employee relations, I think this quality is going to be required even more to even greater extent. So listening is one ability which I think we all have got to develop, and that's the reason Bala said, sir, I do a program in the morning which we had spoken about in the past, and there are people from employee relations also background who join. The idea is just to build this ability to keep calm, listen, and be aware of what's happening around me at this very moment, because that's a very important quality. I'm pretty I will sure again we tell you have one got. example of it. I will tell Yeah, you please, sir. again people workman because Please. जनरली आप बताए कि ये जो फर्नेस वगैरह में काम करते हैं ना ये फर्नेस में ये हॉट Hmm. फर्नेस में काम करते हैं ना वो वर्कमैन दे आर ऑलवेज वेरी एग्रेसिव और फर्नेस में Ah. हाँ आई विल टेल यू वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कंपनी वेयर दे हैव टू वर्क अंडर द 1200 डिग्री टेम्परेचर एक स्टील Hmm. बिलेट जहाँ जहाँ मोल्ड होता है मेल्ट होता है वहां में काम करना है और ये फर्नेस में है, तो वहां हम कुछ एसी नहीं लगा सकते कुछ बड़े फैन नहीं Yeah. लगा सकते कुछ फायदा Yeah. नहीं है तो बाय और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है बिकॉज ऑफ Yeah. दिस वर्किंग दिस पीपल बिकम्स वेरी एडमंट एंड Hmm. वेरी वोलाटाइल एंड ऑल दिस वो बहुत एग्रेसिव बन जाते हैं फिर उनके इश्यूज इतने रहते हैं और वो क्या करेंगे उसको पता नहीं रहता है तो ऐसे टाइम क्या होता है कि Hmm. वी कैनॉट हैंडल दिस पीपल लाइक नॉर्मल और जनरल पीपल ये लोग जब भी मेरे पास आते थे ना ये लोग जब भी मेरे पास आते थे आई हैव टू हैंडल देम विद डिफरेंट वे तो एक ही बात है कि वो जब आते थे ना वो बहुत गुस्सा लेके आते थे गुस्सा करके आते थे क्या करेंगे हमारी इतने विषय कोई देखता नहीं ये नहीं कैसे काम आप उधर आके काम करो ये करो फिर वो हमें पता था कि भाई ये Some of थोड़ा the सा आगे ways in which they enter your cabin, yeah, normally. ये Very, पूरा very मतलब interesting. परेशान है So तो अभी did उसको you used to सुनना offer पड़ेगा them फिर some yeah. water, glass of water, roti? How exactly would you like to share some nuggets of wisdom, sir? Some tricks and something which you used to do to keep them calm, which is very important thing. As you rightly said, they are working in a very Yes, hot yes. kind of working condition, very different Because working it was condition. not by the nature because it was by the nature become because of the working in the hot area and hot conditions और all these things वो जब आते Hmm. थे तो वो इश्यू भी रहते थे इवन हमने डिसाइड करके भी कुछ नहीं अभी एसी तो नहीं लगा सकते हम पूरा फर्नेस को Yeah. एसी लगाना तो डिफिकल्ट है दे हैव टू वर्क विद दैट बट वो थोड़ा सा उनको समझ लेना भाई आने के बाद समझो फिर उसको समझाओ पूरा सुन लो एक बार पूरा उनको एग्जॉस्ट होने दो पूरा एग्जॉस्ट होने के बाद फिर बोलो यार हम देखो ये ऐसे है आपका काम ही ऐसा है यू ऑलरेडी वर्क देयर आप वहाँ स्किल लोगे आपके सिवा उधर कोई दूसरा काम नहीं कर सकता आप बहुत कंटिन्यू हैं बट जो कर सकते हैं फिर उसको कुछ बीच में पानी का अरेंजमेंट करना थोड़ा सा कोल्ड वाटर ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करो या हमने इवन मिल्क चालू किया था उधर लोगों को दोज हु आर वर्किंग इन फर्नेस वी यूज टू प्रोवाइड मिल्क वंस इन Bill. Ah, okay. शिफ्ट मिल्क वो थोड़ा सा Hmm. या तो एग्जॉस्ट फैन बाहर से लगा दो कहीं थोड़ा सा करो लाइक दैट वी वर डूइंग बट मेन थिंग वाज कि दे वर सेइंग कि हमारा कोई सुनता नहीं है कोई कुछ करते नहीं तो हमारा मेरा बेसिकली काम था कि भाई आने के बाद भाई हाँ भाई बैठो Hmm. आराम से बैठो क्या क्या प्रॉब्लम आप बताओ पूरा उसको सुन लो और फिर बाद में अपना उसको थियरी बताओ या जो हमें करना है वही बताओ वो होने के बाद Hmm. उसको लगता है यार चलो साहब ने सुन लिया अभी कुछ तो हो जाएगा करके वो चले जाते बट इट इज नॉट नॉर्मल लाइफ नॉर्मल वर्कर जैसे नहीं है मतलब यू हैव टू हैंडल देम डिफरेंटली ये भी है ऐसा Very, very important audience. Coming back to the same conversation which I had with Harsh Kapoor Pillai, she also said one thing. She used a word called, rather a phrase called compassionate empathy. So या she said that there are करेक्ट three different types of empathy, and the most powerful, most useful type of empathy is compassionate empathy. Of course, you can watch that conversation in which you can also go through all the three different types of empathy which Harsh has spoken about. Now, it's very important for us to have this compassionate empathy towards the pain, problem,
working conditions, some of the challenges which these people are having. Because if you look at the salary and all that working conditions, these are Yeah, not too high correct, in correct. most of the organizations. And despite the fact that all the management team members and unionized members, employees, they are working in the same company, though the company's name is same, but the working conditions are different. There are people who are sitting in AC and वही who वही are very. उनका कहना था कि आप तो एसी में बैठे हैं, आपको पता नहीं है, उधर फर्नेस में आके वहाँ खड़ा रहो, आपको पता चलेगा क्या है, लाइक दैट दे राइट, क्या करेंगे? I remember in one of the company, what happened is that, and this is what I recall while thinking about one of the conversation which I had with another employee relations veteran. He has been a veteran in the field of HR, IR, and administration. He said that once what happened is that some employee relations, some unionized members who were agitated for some reason related to salary, they came to his cabin and almost forced all the management team members to come out of their cabins, AC cabins, and come to a meeting room. And once everybody came to the meeting room, they came to the meeting room, they stood at the gate door so that people can't go out, and then they switched off all the fans, all the ACs. They wanted Yeah, them to experience yeah, how it feels, how it pinches, where exactly it pinches. And then the HR head told me that Arun, within 1 hour, within one and a half hour, actually people started taking up their shirts. They took off their shirts, they came to Banyan, and then they were talking to employees. So that is the message which the union people wanted to give, that we are in the same company, yes, but we are different because the working conditions are different. So this compassionate empathy is very important, and that's what I think Balasaheb sir has been sharing through some of these examples. Thank you so much, Balasaheb sir. It's amazing. I always tell people that it's not nothing is small. Even the smallest of yeah, sharing yeah, have some correct. nuggets. Like we spoke about compassionate empathy, we have spoke about the need for us to become emotionally intelligent. We have spoke about the need to stay calm, to stay patient, right? We have spoke about the quality of patience. We also spoke about the need for us to think of some breakthrough solutions in the spur of moment when the time given by boss, BOSS, is just 24 hours, is not going to happen. In every case is unique, right? That's the reason we also said that it's always important for any employee relations professional not to shy away from reaching out for help to somebody like Bala Sahib. Sir, and there are people who are experienced, they have seen it. So why to reinvent the wheel? Why don't we just get the message and take quick actions? And of course, proactiveness is very important. Great. Balasaheb sir, we have been there in Maharashtra over last many, I think more than a couple of decades ago, I guess, so maybe more than that, longer than that. Would you like to talk about some employee relations cases which you felt in places close to Pune? And I was in, I will tell you, I was in Nagar, Ahmednagar. Nagar, yeah. I was in Ahmednagar, and this Shiv Sena was union was there. Shiv Uh, Sena union that time it was very tough because in 90s, mm. and we had three units in the Nagar. A lot of issues were there, and a lot of indiscipline issues were there. Basically, union was very aggressive. Union was creating a problem to the management and all these things. And when I joined this company, because right from beginning I have some my principles how to deal with the guys and all these things. I was pressurizing them to maintain the at least discipline, Mm. and for that purpose I have to take some few tough stands. बट ये यूनियन Mm. को जनरली क्या होता है कि कोई टफ स्टैंड लेता है, नया बंदा आके करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता. Mm. They start again creating problem. They start threatening to the HR managers also. Even I used to get threat from the union guys Yeah. कि आप कंपनी में आके आपके पैर तोड़ देता है, बहुत हो गया. Threatening, threatening, डराना, yeah, fear पैर factor. तोड़ देता है बहुत, वो गुस्से में आके कुछ तो यूनियन कमेटी वाले कुछ बोल देते हैं तो वो मैं आउटसाइड यूनियन वाला था कि नहीं नहीं आपको देखना पड़ेगा, आपके पास बहुत हो गया है, आप ज्यादा ये कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं. तो फिर वो सुन लेने का फोन पे बोला साहब नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको शायद कुछ गलत है, मैं जब मिलेगा तो आपको बता देता है क्या एग्जैक्टली क्या चीज है. Yeah. दैट इज Mm. डिफरेंट. बट क्या हुआ ऐसे करके करके आई हैड टेकन सम पंगास. तो ये कारण यूनियन बहुत मेरे से थोड़े से नाटक करते थे, बिकॉज अच्छा. मैनेजमेंट ने मुझे बोला था भाई हमको डिसिप्लिन लाना है, जो करना है आप करो, बिकॉज मैनेजमेंट सपोर्टिंग मी. Yeah, yeah, तो ये बहुत होने के बाद एक दो आदमी के ऊपर हमने एक्शन लिया था, डिसिप्लिन एक्शन लिया. कुछ लोगों को हमने काम पे लगाया, कुछ लोगों को हमने डिसिप्लिन एक्शन ले लेके, कुछ लोगों को हमने वो निकाल भी दिया था बिकॉज ऑफ दी अदर मिसकंडक्ट. ये होने के कारण थोड़ा यूनियन नाराज थी. तो एक दिन क्या हो गया, ये यूनियन बंदा ने एक दिन मुझे रात में फोन किया, अननेम्ड, yeah. माइट बी अराउंड 2 o'clock. Wow.
Oh, 2 o'clock उस टाइम तो हमारे वो मतलब फोन क्या सिंपल फोन थे ना, सदा डायल वाला फोन थे। फोन आ गया तो वो बंदा स्टार्टेड अब्यूजिंग मी विद okay. कॉन्सिक्वेंसेस, गाली दे रहा था, ये कर रहा था। ये सुन के तो फिर डर गए। फिर मैं फोन कर रहा था तो मेरी वाइफ जाग गई, बोले क्या हो गया? बोले ऐसे ऐसे कोई फोन कर रहा है और वो मुझे धमकी दे रहा है कि तुम बाहर आओ, ये करो वो करो। मैंने सोचा क्या करेंगे फिर, अभी उस टाइम तो कुछ वो कॉलर आईडी वगैरह या मोबाइल कुछ नहीं था, हमें हम्म, पता नहीं हम्म, चलता था कौन फोन हम्म। कर रहा है, क्या हुआ है। वो सब डर गए, वाइफ वगैरह डर गए, तो बोला ठीक है यार भाई, डर के कुछ फायदा नहीं है। मैंने भी उसको बोल दिया तुम्हारे में इतनी हिम्मत है ना, आओ बाहर, मैं आता है बाहर 2 बजे। 2 बजे आई टोल्ड हिम कि आओ बाहर आओ, जरा देखते हैं कुछ। तो अभी बहुत वाइफ encourage, yeah. डिड वाइफ डिडंट अलाउ मी, बट उसके बाद में तो चलो फोन काट दिया। फिर आई टोल्ड माय बॉस कि रात में कॉल किया मैंने कि साहब ऐसे ऐसे हो गया, और हमें पता था कौन कर रहा है फोन, क्या कर रहा है। वी आर नोइंग ये किसका नाटक है क्या है, बट वो नेम भी नहीं बता रहा था और किसी दूसरे के सामने दूसरे को लगाया था फोन बात बात करने को। Yeah. आई टॉक टू माय बॉस, बॉस ने इमीडिएटली गेट पे, कंपनी गेट पे फोन करके वो सिक्योरिटी वगैरह बुला दिया। और दूसरे दिन फिर डिस्कस करने के बाद, ये फर्स्ट जो कॉलर आईडी वाला फोन आता था ना, कॉलर आईडी वाला, वो Uh, कॉलर आईडी का फोन दूसरे दिन मेरे घर में लगाया था कि एटलीस्ट यू विल कम टू नो। Actually, every child has got some trace of opportunity, so that is a good improvement. You got another. या तो बट ये होता है कि देखो व्हेन यू आर टेकिंग टफ स्टैंड, और यू हैव टू सी दैट कि प्रॉपर डिसिप्लिन इज मेंटेन, प्रॉपर प्रोडक्शन इज मेंटेन, एवरीवन विल फॉलो द लॉज रूल्स रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। उस टाइम कुछ टफ कंडीशन में, सिचुएशन में टफ स्टैंड लेना, कुछ नए रूल लगाना, और दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट लोगों को अच्छा नहीं लगता, यूनियन को तो ये सब होता है। दीज थिंग्स आल्सो आई हैव फेस लॉट, क्या करेंगे जिंदगी। एम्प्लॉय रिलेशन के केस में एक और चीज, जैसा ऑडियंस आपने देखा होगा, आपने समझ लिया होगा इससे, इस एग्जांपल से, that be ready to have some surprises, often some shocks coming your way, because these are Yeah, part and parcel of employee relations. yes, I'm here to come across a single employee relations head or veteran professional who has not gone through something like this. The nature will differ, but it will happen. I know some people who actually had to deploy some bouncers who used to accompany them while yeah, coming back yeah, home, while going to the yes, office. And this used to look weird, but all these things happen. So I think one of the qualities for any employee relations leader is to just stay calm, smile away, and be ready for some of these. These are part and parcel of work. yes, And mostly, I think people play on your psychology. The fact here is that still we are all working for the same company, including the union members. So there is still some control. Having said that, they will certainly play on your psychology. They will create fear. They will try to break you so that either you just accept their demands, or else you, without making it official, start playing from their side while talking to the management. Like, चलो सर इसको कंप्लीट कर देते सर, बहुत ही लोग परेशान हैं. And somehow they want to buy hook or buy crook or buy some other, I don't know what kind of things they want to get it done. It's a ploy. It's a ploy to play on your psychology, and they also test as to what extent you are gutsy, you are courageous. या yeah. डरने वाले तो इतना डराएगा कि जिंदगी हराम कर वो देगा. भागी जाएगा, फिर लोग तो क्या डर के फिर नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ के भाग जाएगा. एंड आई तो वर्क इन दैट कंपनी फॉर 9 years, आई वर्क देयर इन दैट कंपनी फॉर 9 years नेक्स्ट टाइम। it's very obvious that I could see that you, while going through your profile, I could see that you have been there in a company for almost a decade, in all the यस, companies, which is या awesome, which show the character of the employee relations head or HR head, because here we are not talking to somebody, some IR head who used to change companies because of fear. Here we are talking to somebody who used to look into the eyes of fear and used to stay there. या And I'm pretty sure you must be signing many long-term wage settlements and wage bonus agreements while being in the same company before changing the company, right? So this is great. So courage, sir, आपके हिसाब से courage, हिम्मत, fearlessness, एक guts, कहाँ तक आपको लगता है कि employee relations के professionals के को ध्यान में रखना चाहिए? कहाँ तक आपको लगता है ये जरूरी है? Do you देखिए think there is साहब, a, जहाँ तक इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग, yeah, आप कोई yeah, गलत काम नहीं कर रहे, किसी को आप तकलीफ नहीं दे रहे, और यू आर नॉट वायलेटिंग द लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, या जहाँ तक आप कंपनी और वर्कमैन के लिए काम कर रहे हैं, मतलब उनका बेनिफिट देख रहे हैं बहुत, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट कुछ लोग रहते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म देखने के लिए कुछ, मतलब डिवाइड एंड रूल लगाओ, कुछ मैनेजमेंट को अलग बोल दो, वर्कमैन को अलग बोल दो, फिर दैट दैट टाइम अब वो ऐसे सिचुएशन वाले जो लीडरशिप रहते हैं वो दैट इज ऑफ नो यूज।
बट हमने देखो, हमने कभी भी सर, हमने देखा, हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ये मेरी कंपनी, दिस इज माय कंपनी, और ये काम मुझे दिया है, दिस इज माय ड्यूटी, दिस इज माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई हैव टू डिलीवर द गुड्स। इस करके करके आई वाज नॉट फेयरिंग एट ऑल। मुझे कोई डर नहीं था कि भाई मैं क्यों डरूं, मैं गलत काम नहीं कर रहा है, मैं कर रहा है जो कर रहा है वो कंपनी के लिए कर रहा है, डिसिप्लिन लगाने के लिए कर रहा है, प्रोडक्शन के लिए कर रहा है। एग्रीमेंट जो है रहते हैं, एग्रीमेंट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंपनी। ये तो 3-4 साल में तो हर बार होता ही होता है। उसमें तो हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना है, कुछ यस नो वाली बात होना है। ये सब चीजें है, इससे डर के फायदा नहीं है। वी हैव टू सी दैट कि एट द एंड ऑफ द थिंग कि भाई जो चाहिए हमें एमिकेबल सेटलमेंट करना ही करना है। एक आपको ऐसे एग्जांपल बोलता है, एक बोनस का सिचुएशन था, दिवाली नजदीक आई थी, बोनस का इशू तो सेटल करना था। राइट उस सर। टाइम जनरली परसेंटेज में जैसे 12%, 15%, 17% ऐसे बोनस होता था। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो एक बार देखे कंपनी में क्या हुआ कि आई वॉज वेरी, अगेन, यंग 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 पर्सनल मैनेजर, एंड यूनियन गाइस जो थे मेरे पिताजी के लेवल वाले थे, पिताजी के एज वाले। बट दे वेरी गुड। तो क्या हो गया, एक दिवाली 2-3 दिन का टाइम था, तो बोनस का इशू चल रहा था, और हमारा टॉप मैनेजमेंट दिल्ली से आए थे, तो बोला आज मीटिंग करके आज फाइनल करेंगे। हम्म स्लाइटली मैनेजमेंट वाज एडमंट कि भाई इतना हम दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते। और वर्कर की डिमांड तो हमेशा रहती है, भाई हमें जितना चाहिए करके। उनकी डिमांड थी 20%, और मैनेजमेंट अड़ा के बैठा था 17% हम दे देंगे करके। या 17% पे मीटिंग ब्रोक हो गया, फिर वो चले गए, भाई साहब ये करो, हमको 20% चाहिए, नहीं तो हम नहीं आएंगे। वो हम्म नीचे जाने के बाद फिर हमको बार बार उसको, यार बुलाओ जरा, उसको बात करेंगे, ये करेंगे। बट दे वर नॉट रेडी टू कम। बोले साहब हम हम्म नहीं आएंगे, क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कशन किया है, हम नहीं करेंगे। हमें देना है तो 20% दीजिए, नहीं तो हमें बोनस भी नहीं चाहिए, हम ऐसे दिवाली करेंगे। ऐसा नहीं चलता ना हम्म जनरली, इसे तो भाई सेटल तो करना ही करना है। फिर मैनेजमेंट ने बोला कि यार आप जाके उनसे बात करो। मैं अकेला गया अकेला। उधर, यूनियन कमेटी के साथ बात किया, यार ऐसा ऐसा। बोले साहब कितनी बार बात करेंगे, बोले मैनेजमेंट हमसे बात नहीं करता ठीक से, वो एक ही फिगर लेके बैठे, ये ऐसा नहीं चलेगा। बोले क्या करेंगे, मैंने यार कुछ तो है मुझे निकालेगा, हम थोड़ा सा बात करो, डिस्कस करो, चलो उसके। बोले हम नहीं आएंगे सर, हम नहीं आएंगे, आपको जो बात करके आओ, जो बताना है बताओ। अगर हमको एग्री है तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम बोल देंगे हम नहीं करेंगे। फिर आई वेंट टू माय टॉप मैनेजमेंट, ऐसे है। बोले यार उनको बुलाओ तो सही, इधर बुलाओ, हम बात करेंगे। आई अगेन वेंट टू देम, आई टोल्ड देम कि यार चलो साहब बुला रहे, एक बार बात करके या सुनो। वो फिर दे नहीं आए। फिर उन्होंने, मैंने बोला साहब ये तो नहीं आ रहे। बोले क्या करेंगे। बोला यार आप जाके कुछ तो बात करो, सेटल करो कुछ तो, थोड़ा बहुत क्या करना है दे दो, बट हमारे पास स्कोप नहीं है ज्यादा, आप सेटल करो। फिर मैं नीचे गया, मैं सब कमेटी मेंबर के साथ बात किया, और 17 का 17.25% में मैंने फाइनल करवा दिया। वाह ओनली वाह। बाय गिविंग 0.25% एक्स्ट्रा, वेयर दे आर एक्सपेक्टिंग ऑफ 20%। बट ये होने के बाद मैं जब वापस आ गया तो मेरा, यार ये टॉप मैनेजमेंट का सुन रहे, मेरा सुन रहे, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट हम्म को लगता है कि यार हमारा नहीं सुन रहे, इनका सुन रहे, वो भी थोड़ा सा होता है। आई वाज वेरी यंग, तो ये सिचुएशन इतना डिफिकल्ट था कि मैं टॉप मैनेजमेंट से कैसे बिहेव करूँ और इनसे कैसे बिहेव करूँ। बट सिचुएशन तो क्लोज करना था, दिवाली का टाइम था, बोनस था। और उन्होंने बोला साहब आपने बोल दिया अभी 17.25, आई हैव नो, वी हैव नो इशू। उन्होंने इजीली एक्सेप्ट किया, कहाँ साइन करना है बोलो, बट हम उधर नहीं आएंगे, नीचे आके साइन करेंगे। और उन्होंने एग्री कर दिया, तो वो मैनेजमेंट ने, चलो इशू तो सॉर्ट आउट हुआ, बट मैनेजमेंट के दिमाग में हमेशा रहता था कि यार हमारा नहीं सुना बट इनका सुना। तो इन्होंने क्या ऐसा, हम्म। हाउ इज बिहेविंग विद द पीपल कि इनका सुन रहे हैं लेकिन हमारा नहीं सुन रहे हैं। बिकॉज इट इज अगेन अगेन माई कॉन्टेक्ट, माई रिलेशनशिप विद पीपल दैट वर्क्स। Yeah, yeah. तो This ये is भी very होता है कि हाउ यू डील विद द पीपल, आपका कितना ट्रांसपेरेंट डीलिंग है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है, और हाउ यू आर डूइंग फॉर द पीपल आल्सो, वर्कमैन। बिकॉज जनरली yeah. वर्कमैन, ये दे आर वेरी सेंसिटिव। उनको पता है भाई ये साहब सिंसियरली काम करे, हमारे लिए काम करे, कंपनी के लिए काम करे, तो दे एक्सेप्ट। बट एडमंट वे से चलेंगे तो फिर नहीं होता सर। Very interesting, sir. The way you narrated is this real life story is very insightful because it's also important for the employee relations leader to ensure that he engages not only with unionized members but also Yes. engages properly suitably with the management team, which is very Yeah. important. I think sir has given very insightful message, Yeah. and this is absolutely true. It's just that we don't want to say much on this. It's a part of human dynamics. It's a part of group working. It's a part of this world, the way this world moves. And this is one thing which the employee relations leader has got to keep in mind. Full stop. Great. So this is awesome.
Sir, we spoke about proactiveness towards the beginning of this conversation. What I've seen happening is that suppose all of a sudden some members, employees come to the management or HR head or say CEO, MD, and say that we have formed a union because we get a feeling that the company did not listen to our needs and the company kept on paying very at a very low level as compared to the money which is being given to workmen in other companies. Coming to proactive way of working, do you suggest to HR or IR heads of companies without a union, where there is no union, to proactively look at the salary figures, to do some internal benchmarking survey, and do something to raise the salaries even before people think of forming union and coming to you and pressurizing them? Because I think salary is one of the most important reasons before the formation of union. Anything on this proactive? There are companies I also work in one of the companies. They used to give increment every year to the Mhm. workmen also. Okay. But that practice was going on for some couple of years. But what happens कि after some days or something like that, बाहर कई कंपनी में यूनियन होता है, यूनियन में एग्रीमेंट होता है कि एक चलो 4-5 हज़ार रुपए इनके बढ़ गए, ये हो गए। उस टाइम क्या लगता है कि यार नहीं यार, हम यूनियन नहीं बनाया था, देखो हमारी यूनियन नहीं थी इसलिए हमको साल में कितना देते, 300-400 रुपए देते, और देखो वो बाहर वाला कंपनी उधर 4 हज़ार एग्रीमेंट हो गया। जनरली ये होता है, बट अगेन आई विल से कि डीलिंग विद द यूनियन इन एनी इंडस्ट्री इज ऑलवेज बेटर। यस, यूनियन के Hmm. साथ ही एग्रीमेंट करना इज बेटर। यहाँ कंपनीज रहते हैं कि भाई यूनियन नहीं चाहिए, यूनियन नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ इट इज देयर बर्थ राइट। ये ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, उनके फंडामेंटल राइट से उनको यूनियन बनाने का राइट है, उनको डिमांड करने का राइट है, उनको यूनियन बनाने का राइट है। तो उसके हम उनको डर के कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज बिल्कुल डीलिंग विद डर द के यूनियन। फायदा नहीं है, and this is a यस, very important point because I have worked in different companies. I have seen companies which are very professional companies, and in case a union was formed in these companies, things were absolutely normal. यस, The company did not get rattled or shocked or something. They simply created a team which यस, just started negotiating, या having meetings with the union. And I also have seen other companies, smaller companies at times, हमें यूनियन नहीं which चाहिए। which do not want a union at यस, any यस, cost, and they will put undue pressure on HR team, IR leader. They will also kind of do all kind of tricks of the trade to see that the union is not created. In the process, they lose their credential credibility. In the process, the union, the employees will start mistrusting or distrusting, यस, mistrusting the management team members, and then actually things become worse and worse and worse and worse. And still, these companies will put the entire blame on IR leader यस, as why did you allow the union to be formed, boss? This is करेक्ट, something which is there करेक्ट, in the constitution, right? Is their right. And still, I know some companies which will make undue noise, hues and cries for things which are actually a reality of maybe reality in राइट। 1995%, more than 95% of companies. Would you like to make some comment on this as how a company should respond or react, whatever respond when the union is formed? Any When the experience? union is formed, I think company should not take any negative action or adverse action against it, Yeah. because in fact they should welcome. I told you example कि the management asked me to form the union. Yes, there are companies, but things are becoming better when the union is there. Only we should know कि how to deal with the union, how to deal with the people, how to deal with the outsider leader also. And हमें is again negotiation process, bargaining, collective bargaining process is there. हमें क्या देना है, कितना देना है, क्या देना है, we can always convince them, we can always convince them. और नहीं होता है तो फिर तो फाइनली तो दे डिसाइड। ऐसा हो गया एक कंपनी में मेरा स्ट्राइक हो गया, बोले नहीं नहीं आप लोग ये नहीं देते, स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक, वो भी सडन स्ट्राइक हो गया। सडन स्ट्राइक होने के बाद हमने सोचा कि भाई ये स्ट्राइक पे गए थे, अभी रहने तो स्ट्राइक। फिर हमने भी नहीं किया, हमने उनको बुलाया भी नहीं, कुछ बात नहीं किया, फिर वो स्ट्राइक कंटिन्यू रहा, नो वर्क नो पे, नोटिस लगा दिया, ये हुआ, मैटर वेंट टू फैक्ट्री इंस्पेक्टर, मैटर वेंट टू लेबर ऑफिस। वो सब होने के बाद हमने बोला कि हमारी गलती नहीं, ये लोग तो हम एक दे रहे थे एग्रीमेंट का बेनिफिट, उनको पास ऑन कर रहे थे, दे आर नॉट एग्रीइंग एंड दे हैव सडनली स्टॉप द वर्क विच इज Yeah. टोटली इलीगल। ऐसा Yeah. करके करके मैटर इतना चला कि वो फिर बहुत दिन स्ट्राइक चला, बट फाइनली विद द इंटरवेंशन ऑफ दिस लेबर ऑफिस एंड ऑल दिस थिंग, हमने बोल दिया कि साहब ये इनका जो इलीगल डिमांड्स है, इलॉजिकल वे से चल रहे हैं, और दे Yeah. आर टेकिंग लॉ इन टू हैंड। सडनली काम बंद कर देना, स्ट्राइक करना है, इज नॉट द वे। दे शुड कम एंड डिस्कस विद अस, दे शुड कम, वी आर रेडी टू ओपन, वी आर ओपन टू डिस्कस। एंड इन तरीके से हमने वो मैटर सॉर्ट आउट किया था बाय विदाउट गिविंग एनीथिंग।
विदाउट एनीथिंग दैट स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ. इनफैक्ट हमने उनको नो वर्क में किया, उसका फिर वो कोर्ट कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट से भी हमने वो केस जीता, बिकॉज नो वर्क नो पे इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट आल्सो. बिकॉज Yes, yes. फाइनली मतलब वर्कर को कुछ नहीं मिलता, बाय बाय टेकिंग द लॉ इन हैंड उनके हाथ में कुछ नहीं मिलता था, थोड़ा कंपनी का नुकसान होता है, बट फॉर द फ्यूचर बेनिफिट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट में एक बार ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा टफ स्टैंड लेना भी ठीक रहता है. आप यू टेक द टफ स्टैंड, योर स्ट्राइक भी होता है, हाउ टू डील द सिचुएशन. बिकॉज जनरली आई वर्क इन द कंपनीज वेयर अल्टरनेटिव ऑप्शंस वेयर देयर फॉर मैनेजमेंट टू हैव अ प्रोडक्शन एंड ऑल दिस थिंग. तो एक यूनिट थोड़े दिन बंद भी रहा तो चल सकता था, वो सिचुएशन में होना चाहिए. इन सिचुएशन में हमने फिर वो डील करके बराबर एक करके फाइनली विदाउट गिविंग एनी कमिटमेंट, और हमें जो देना था वही हम दे सकते हैं, बाद में वो भी रियलाइज हो जाते. बट इन शॉर्ट टर्म क्या होता है, वर्कमैन दे बिकम एग्रेसिव, नहीं यार स्ट्राइक करेंगे तो मैनेजमेंट दे देगा, ऐसे उनको लगता है. स्ट्राइक करेंगे हम, काम बंद कर देंगे तो मैनेजमेंट इमीडिएट हमारा डिमांड पूरे करेगा, लाइक दैट दे फील. बट ऐसा नहीं होता है सर, प्रोफेशनल Hmm. मैनेजमेंट होता है, जो करना है वही करते हैं, जो देना है वही देते हैं, और जिस तरीके से करना है वही करते हैं. तो फॉर दैट एज ए HR हेड वी हैव टू हैव मीडिएटर बिटवीन द वर्कमैन एंड द मैनेजमेंट. राइट फीडबैक दे दो, राइट उनको अप्रोच करो, राइट कम्युनिकेशन दे दो, क्या हो सकता है क्या नहीं, वो सिचुएशन देके वी कैन कन्विंस द मैनेजमेंट आल्सो, वी कैन कन्विंस द वर्कमैन और यूनियन आल्सो. Like that, I work in the proactive way of So this is a professional very development. important, very powerful point which Balasaheb sir has shared. It's very important for the IR leader or HR leader to appreciate the fact that he or she is going to play a very important role. And of course, we also expect management to be more mature. They should not wait for union to come and pressurize them for them to be able to sign on the papers of increment. If HR or IR leader has done some good job in a proactive manner and come to the management, despite the company not having union, let the management also listen to HR IR leader because that's the way I think things become better. So let me put one hypothetical scenario for you. This will certainly guide all the younger HR and IR leaders in a proactive way. Let's take the example of a company which does not have a union, but there is some kind of, हिंदी में बोलते हैं सुगबुगाहट, कुछ ऐसा, there might be some murmurings which indicate that employees are not happy, workmen are not happy. Of course, they might not be happy because of money, because of working conditions. We spoke about tough working conditions and all that. Or they might not be happy for whatever reason. They might have seen some disparity, perceived disparity in the treatment given, meted out to them. And here comes a young IR leader in the company who has got an experience of maybe 5 to 10 years, not more than that. And the management says that, hey, Mr. Young IR leader, it's your job to see that there is no union. You manage it, whatever you want to do. BOS's boss has given the verdict. Now the young IR leader comes to Balasaheb sir. Balasaheb sir, what do you think I should do to see that things remain better, and what kind of proactive actions I can do, maybe in the field of communication, building a very good environment or money or salary, whatever. What kind of advice, Balasaheb sir, would you like to give to this young IR leader? Because I'm pretty sure many people are going to watch this video conversation, and many people might be in the experience bracket of 5 to 10 years who might be working in various small to medium sized multinationals or companies which are in thousands in number in Maharashtra, around Pune, in Pune. What would you like to advise to these people? तो सर मेरा एडवाइस ऐसा रहेगा कि देखिए, यूनियन नहीं चाहिए बोलना बहुत इजी है, बट एक बार यूनियन बनने के बाद उसको रिमूव करना, निकालना और नो यूनियन करना, उसके लिए कर सकते हैं, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. बट फाइनली हमें क्या मिलना है, क्यों कर रहे हैं हम, ये भी देखना है. Absolutely. ये चीजें देखो, मैनेजमेंट तो एक बार बोल देगा आपको लिसन करना है, ठीक है सब हम ट्राई करेंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें दो चीज करना है. एक तो मैनेजमेंट को कन्विंस करना है भाई कि हैविंग यूनियन इज बेटर, और यूनियन नहीं रहने के बाद हम क्या आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, और मैनेजमेंट को बोले कि ठीक है हम ट्राई करेंगे डेफिनेटली, बट इट विल टेक सम टाइम. इट Yeah, इज नॉट yeah, ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा. yeah, It will take some time. We will start working on that. और over a period of time एक सिचुएशन ऐसा आता है कि मैनेजमेंट विल आल्सो रियलाइज कि भाई yeah, यूनियन होना बेटर है, नहीं होना है. सेकेंडली सपोज यूनियन के पास भी कुछ लोग क्या होता है, वर्कमैन कुछ बार होता है कि वो जाके फंस जाते हैं, बाहर वाले लीडर के पास फंस जाते हैं. they do not want to actually, यस. yeah, this तो stuff. वो भी मतलब डायले में आ जाते हैं, यार क्या करूँ, हम गलती तो नहीं किया, हमने यूनियन चले गए, क्या हो गया. तो वी हैव टू सी ऑल दिस सिचुएशन, वी हैव टू वर्क ऑन दैट कि भाई ये लोग यूनियन से बाहर लाना है, तो वो हमें उस तरह से काम करना है कि वाई दे आर फेड अप एंड फेड अप विद द आउटसाइड यूनियन. फिर उस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम थे, वो प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करो.
उनसे कम्युनिकेशन, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन रहो, उससे बात करते रहो, डायलॉग कंटिन्यू रखो। फिर उनको बताओ भाई मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट क्या करना चाहते हैं आपके लिए, बट ये बीच में अभी यूनियन आ गया है, इसके कारण से हम नहीं कर सकते। फिर ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा बात करके करके हो सकता है कि कुछ दिन के बाद पीपल विल रियलाइज कि यार चलो हम मैनेजमेंट के साथ जाएंगे, यूनियन को छोड़ देंगे, बिकॉज ये भी ऐसा ही बाहर वाला लीडर है, ये उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, हमारा तो फायदा कुछ नहीं है, नुकसान तो होगा, हमारा होगा और कंपनी का होगा। तो ये मतलब ये, मैं तो बोला ऐसे ओवरनाइट होने वाला नहीं, सब इसमें बहुत काम करना पड़ता है। Yeah. You have to be on the job, you have to meet the people, you have to take a lot of time, you have to spend with them, कन्विंस करना है, ये करो, उनके कुछ जो बेसिक थिंग्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट आउट करो, मैनेजमेंट से कुछ बात करो, मैनेजमेंट से जो फंडामेंटल राइट देना है वो दे दो, उनके कुछ वर्किंग कंडीशन में इंप्रूवमेंट करना है वो करो, उनके कुछ Yeah. बाकी कुछ कोर्ट मैटर रहते हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज रहते हैं, ये सब करके करके विथ मतलब कॉम्प्रहेंसिव वे से हम काम करेंगे, तो एट द एंड आइदर वो यूनियन को छोड़ देंगे, या तो मैनेजमेंट विल एग्री कि भाई हम यूनियन ठीक है यार, अभी तो सिचुएशन ठीक है, वी कैन हैंडल द यूनियन। यही हो सकता है। Very, very interesting, very interesting. Sir, thank you so much for sharing these very important points, sir. Sir, would you also like to talk a bit about the kind of engagement that the IR leader or HR leader can get into with the people on the shop floor? Would you also like to talk about some communication plans, some weekly, some toolbox talk, or something which you think will help them in understanding the workmen better and getting and engaging with them in a better way as a proactive measure I'm talking about. सर मेरा अभी हमेशा रहता था कि आई ऑलवेज टेल द प्रोडक्शन और शॉप फ्लोर गाइस कि भाई यू शुड बी द एचआर ऑफिसर्स ऑफ दैट वर्कमैन। Very कि important. हाँ, क्योंकि क्या होता है सर, देखो अभी बड़े प्लान में हम जब काम करते हैं, एक वर्कर को सपोज उनका काम छोड़ के एचआर में आना है ना, इट टेक्स एटलीस्ट हाफ एन Mm. आवर, इट टेक्स एटलीस्ट हाफ एन आवर। Yeah, yeah. और इशू रहता है, क्या रहता है, उसकी लीव का कुछ इशू है, उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका कोई लोन का इशू है, उसके कोई एक आधा कोई स्कीम का प्रॉब्लम है। और ये सब चीजें है ना, ये सब हम शॉपलोर में कर सकते हैं, शॉपलोर वाला Yeah. कर सकते हैं, बिकॉज ही कैन टॉक टू दैट गाइज, ही कैन कलेक्ट हिज ग्रीवेंसेस, ही कैन कम टू एचआर और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमने क्या किया था भाई, ये लोग नहीं आ रहे थे, फिर आपने जैसा बोला कि हम बोलते कि एक दिन हम आके बैठेंगे उधर, एक Yeah. पर्टिकुलर टाइम में हम आके उधर बैठेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, और जो वर्कर को आना है वो भी उधर बात करेंगे हमारे से, और वो प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट, बट वो आपके प्रेजेंस में हो जाएगा। आप भी दो Yeah. घंटा दे दो पर्टिकुलर टाइम में, ये 2 घंटा हम बैठेंगे, आप भी बैठो, और जो आना है, जिसको आना है, जिसके प्रॉब्लम है वो बैठो। बट जनरली I used to always, I always visiting factories. I always go to people. I always go to shop floor. और शॉप फ्लोर में बात करके तो मुझे कोई नहीं, इवन मैं तो कभी यूनियन को बोलता था, यूनियन वाले जनरली क्या होता है, साहब देखो वर्कर को कन्विंस करना कितना डिफिकल्ट है, या तो आप एक काम करो, आप जाके वर्कर को बोलो। मैं बोला Mm. देखो भाई मैं जाके, मैं बोलो, बुलाओ उनको आपके सामने बोल देता मैं। ऐसा यूनियन हमको थ्रेटन करती ना कि आप बोल दो, उसको लगता है मैं कि इस मैंने विषय नहीं कैसा आप ही करके देख लो हाँ हाँ, आप ही करेक्ट कर दो, माने उनको करेक्ट लगता है सही कि ये क्या जाएगा, ये नहीं जाएंगे। उल्टा हम तो बोलते थे यार बुलाओ हम बोल देंगे जो आपको बोला है, वो हमको वर्कर को बोल देंगे, उसके गलत कुछ नहीं है। हाँ, उसको गलत कुछ नहीं है, आप लोग कन्विंस नहीं हो रहे, पता नहीं आपके कुछ अलग इश्यूज है, बट वी कैन गो टू देम। ऐसी सिचुएशन में एक कंपनी में हम, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन, हम पगार नहीं दे देते टाइम पे, हम्म हम्म बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन और कंपनी पगार लेट हो जाता था, 2 महीने 3 महीने लेट हो जाता था। या ऐसे टाइम लोग देखो, पीपल आर सैलरी, मंथली सैलरी आने के बाद ही काम होता है, सब घर चलता है। तो बट कंपनी का कंडीशन भी खराब था, रियली कंपनी वॉज सेट। ऐसे कंडीशन में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। वो हमारे पास हम्म आके कुछ मीटिंग करते थे, ये करते, साहब ऐसे कब मिलेगा, क्या होगा। हम बोलते थे भाई 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, नहीं नहीं साहब अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, वर्कर लोग इधर आके बैठेंगे, सब आपका ऑफिस में आके बैठेंगे। बोला अभी आके बैठे क्या, ऐसे कंपनी प्रॉब्लम है, और इधर आके बैठेंगे तो और प्रॉब्लम में और आएंगे, बढ़ेगा और प्रॉब्लम है। तो नहीं नहीं सब वो, फिर वो बोलते थे नहीं नहीं आप एड्रेस करो लोगों को। तो इनफैक्ट आई एड्रेस दिस गैदरिंग आल्सो, अब 500 600 पीपल एड्रेस कि मैनेजमेंट का क्या प्रॉब्लम है, सिचुएशन क्या है, हमने यूनियन को क्या बोला है, क्या हो सकता है। और हम हमेशा वर्कर को बोलते थे, यूनियन को बोलते थे, यू शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर द सिचुएशन, या यू शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर, यू शुड नॉट, कि आप लोग ऐसा करेंगे ना तो मैनेजमेंट कंपनी बंद करने को बंद कर देगी। हाँ, ये इतना हम्म डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आना है, कंपनी फिर चालू करना है, फिर नॉर्मल में लाना है, तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो सिचुएशन विल बिकम डिफरेंट। तो इनफैक्ट आप भी काम करो कि आप जो हम बोल रहे हैं वो कन्विंस करो, या तो हम कन्विंस करेंगे, बिकॉज ये कंपनी का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये किसी का नहीं है। पैसा नहीं है हम्म कंपनी के पास तो क्या कर सकते हैं ना, कंपनी चल सकती है ना, आपको सैलरी दे सकते हैं,
ये सिचुएशन इंप्रूव करने तक आप लोगों को सपोर्ट करना है। और ऐसे बहुत से टाइम मैंने एचओडी के साथ बात करके, शॉप फ्लोर में बात करके, इवन यूनियन एंड वर्कमैन के साथ बात करके हमने ये सिचुएशन हैंडल किया है। क्या करें, करना पड़ता है। बट वो Hmm. यूनियन यूनियन कमेटी के साथ सामने। Great, great insights, sir. I'm pretty sure this part of conversation, of course, rather the entire conversation is going to help many HR and IR leaders. So I think sir spoke about some points which are very important. First of all, he spoke about the fact that it's not only HR and IR leader who is responsible for managing union and management and seeing that engagement happens. It's also rather it's primarily the responsibility of operations head, shop floor managers. And that's the reason I also have seen that the companies which do pretty well on managing union are the ones where HR IR leader and the shop floor head, the operations head, both used to work in tandem. Both were having a very good rapport. It's very important because if there is any एक risk, union is going to take it to a different in a different direction. मैं एक And एग्जांपल देता है। एक टाइम yeah, स्ट्राइक चल रहा था कंपनी में, yeah, और एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, रोड uh-huh. एक्सीडेंट हो गया और ब्रेन इंजरी हो गया। तो ब्रेन इंजरी, ये वाज अनकॉन्शियस एंड स्ट्राइक के टाइम ही वाज एडमिटेड इन वन ऑफ द हॉस्पिटल। वहां जाने के बाद तो डॉक्टर ने बोला इसका ब्रेन का सर्जरी करना पड़ेगा, और इसमें तो बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्या कर सकते हैं। अभी सिचुएशन में वर्कर, आपको पता है वर्कर के जो ऑलरेडी स्ट्राइक पे है उसके बाद पैसा नहीं, क्या कर सकते हैं। फिर और वहां तो स्ट्राइक चल रहा था, इसमें मैनेजमेंट और उनके हमारे रिलेशन तो इतने अच्छे नहीं थे। फिर उन्होंने कुछ ट्राई किया, इधर उधर से थोड़ा बहुत पैसा कलेक्ट किया। बाद में उन्होंने, किसी ने बोल दिया कि नहीं यार देखो, इसमें सोल्यूशन सिर्फ बाला साहब निकाल सकते हैं। बोले हम कैसे जाएंगे। बोले हम कैसे जाएंगे यार, हम तो स्ट्राइक कर रहे हैं और कंपनी बंद है। बोले नहीं नहीं, वो करेंगे सपोर्ट। फिर मुझे एक कॉल आ गया इमीडिएटली। बोला कहाँ है पेशेंट, मुझे पता था। मैंने देखो ठीक है, मैं हॉस्पिटल में आता है, हॉस्पिटल आके मैंने डॉक्टर से बात किया, उन लोगों से बात किया, फैमिली मेम्बर से बात किया। मेरे साहब ऐसा ऐसा है और इसका अर्जेंटली ऑपरेशन करना है और इसको पैसा लगेगा। मतलब कितना लगेगा। बोला एटलीस्ट 1 लाख। उस टाइम के ज़माने की बात है, 2005 की बात कर रहे हैं मैं। बोला 1 लाख तो आप एडवांस भरो पहले, बाद में भी 2-3 लाख रुपए लगेगा। Yeah. अब इनके पास पैसा नहीं है, कुछ कर सकते हैं क्या। बोला हम थोड़ा, नहीं नहीं यार 1 लाख तो भरने पड़ेगा। फिर हमने सोचा कि चलो यार हम मैनेजमेंट से बात करते हैं। आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर वेद मैनेजमेंट विल एग्री टू दिस। मैंने Yeah. मैनेजमेंट से बात किया, वही ऐसे ऐसे और हमने हेल्प करना चाहिए, बिकॉज ठीक है स्ट्राइक है, स्ट्राइक वर्कर उनका काम करे, हमारा काम करे, बट एज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड वो दैट वर्कर इज इन प्रॉब्लम, और Humanitarian हमें group. Yeah, हेल्प करना absolutely. है एज ए एम्प्लॉय। फिर मैनेजमेंट ने, मैंने एक स्पेशल नोट भेज के somehow आई कुड कन्विंस द टॉप मैनेजमेंट, एंड हमने 1 लाख रुपए उसी दिन 1 घंटे में जाके फैक्ट्री से चेक लाके वो हॉस्पिटल भर्ती कर दिया, और वो बेचारा का जान बच गई। तो इन लोगों को इतना पता था कि भाई सिचुएशन कैसा भी होने दो, बट बाला साहब ऐसी चीज है कि वो हमें हेल्प कर सकते हैं। यस। Mm. तो ये भी Mm. करना पड़ता है इस टाइम में। वर्कर को भी थोड़ा फील अच्छा होता है कि भाई चलो टिपिकल सिचुएशन में ये काम आ गए, और मैनेजमेंट को कन्विंस करके ये भी होता है यार चलो स्ट्राइक है बट हमें एज ए एम्प्लॉय हमें हेल्प करना है। तो थिंग्स आर बिकमिंग Very, इजी। very important point because the passion, the energy with which Balasaheb sir has been sharing his thoughts and experience is very obvious that for being a good, rather great HR and IR leader, it's important for us to take deep interest in the field of यस, employee relations. It's very obvious while listening to you, sir. I can feel that टू energy with which अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स आल्सो, टू गो टू देयर understanding शूज। empathy is very important. And I think it's very important, as Balasaheb sir, it's very important for the IR leader to have personal credibility. यस यस। I think it needs a lot of hard work, commitment, हाँ, passion, some sense इसमें of आपको टाइम purpose, देना है, time, इसमें then लड़ने, knowledge, नॉलेज knowledge. देना है, वो इधर उधर जाना है। अभी देखो मैं खुद वो वर्क करके उधर जाता था, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से बात करता था, फिर वो इधर उधर उनको मैं ब्लड अरेंज करो, पैसे का अरेंजमेंट करो, उनको इधर उधर लेके जाओ, ये थिंग लॉट ऑफ थिंग, फैमिली को कन्विंस करना है, ये करना है, बहुत डिफिकल्ट होता है। बट ये करना I पड़ता है think, I सर, बट think as नीड you प्रोसेस। rightly said that at the core of solving any union management problem lies a very strong, dedicated, committed, यस passionate, and knowledgeable and experienced IR leader. And gentlemen, for those who are watching the conversation, in case you want to have some support, you can certainly reach out to Balasaheb sir. I'll be certainly, while editing the video, share his contacts, his email IDs, and all that. And we are talking about employee relations, which is very serious a matter, very sincere matter, because this can close the companies, this can make the companies grow also. Of course, most likely companies grow only. It's just that we need to keep our thought process open. We need to keep our mindset open. We should not become biased the moment somebody comes and says that here is a करेक्ट। union formation later, and then people should not go in dizzy. I think it's all about being very rational, being very passionate, being very hardworking, being very committed to the cause of ensuring that the union
the employee relation situation in the company improves and grows. And thank you so much, Balasaheb sir. It's 1 hour. We didn't even realize that it's 1 hour. And Yeah. thank you so much for coming Sir, for this I can share podcast. at least 40 cases of success stories of my life, but time is So short. we'll have a series now. We'll have a series with Balasaheb Sonawane sir. Thank you so much, Balasaheb Sonawane sir, for your kind sharing and most importantly for agreeing to be the guest in this heart to heart conversation series. We'll certainly have more conversations. And audience, if you want us to bring out some of these very insightful action based stories or experiences, do share your comments, do like and share your comments, and do share your message, your insights about while watching this conversation, because that will inspire us to create more such conversational videos while talking to Balasaheb sir, and that will certainly help most of you, rather all of you. So stay great, all of you. Let's ensure that our companies become better and greater. This is a picture which is very close to my heart. Balasaheb sir also is there in this group, in this team, of very highly inspired and inspiring HR and IR professionals from the from Baramati. And I think let's see that all these companies in all these MIDCs areas keep on growing. And for that, people like Balasaheb sir and their knowledge is going to be very useful. Thank you so much, Balasaheb ji. Thank you so much for your time. Thank you, Arunji. Thank you, Have a Arunji, great. for giving me this opportunity. It will definitely help to the new HR fraternities. But see, this all I could do because of the help and support of the company's vision, company's mission, and the top management support from time to time, as well as the way I was dealing with the union, I was dealing with the workman, was keeping the relations with the people and all these things. I could really succeed in that because it is not only office work. It is you have to see that you can go to in depth. You can reach to the people. You can reach to the families. You can reach to their difficult situation. You can even tell the management also with proper advice from time to time. For that, you should have in-depth knowledge, close contacts, then proper dedication. All these things are there, and so that one can become Absolutely, successful. absolutely. And I think this is very important, sir. And I think, of course, we'll have some more conversations because Balasar sir spoke about something which is very important. He spoke about culture building, the importance of building a culture within the company. Every company has got a set of values. Yes, For example, we can actually use some of these 4 or 5 core values to create a series of communication programs with people working on the shop floor, thereby engaging them with the vision and values of the companies. And that also builds culture, which actually helps a lot when it comes to the field of employee relations and union management and leading. Great. Thank you so much, sir. Look forward to be back to you once okay, again sir. very soon. And of course, Thank as you said, you have got 40 such cases. So we are going to tap into some, we are going to use some more buckets to get some more insights from this ocean of knowledge which you possess. Thank you so much and okay, see you sir. once again. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Bye-bye. Thanks.